Okay, so we'll start counters. Okay, so yesterday we were discussing two type of counters. One was synchronous counter, other was asynchronous counter. Okay, so I told you synchronous counter, all the flip flop together triggered by single clock. While in the case of asynchronous counter or ripple counter, okay, the output of one flip flop becomes the clock for the next flip flop. Okay, so we'll see first ripple counter. Both counter has a own advantage and disadvantage. Ripple counter is basically slower. Okay, so now let us start with asynchronous counter or ripple counter. Asynchronous or a ripple counter. So basically you have to design counter, okay, which can count. And I told you in the beginning, if you want to but n bit counter, okay, you need one flip flop per each bit. Okay, if it's a 3-bit counter, you need 3 flip flops. If it's a 2-bit counter, you need 2 flip flops. Okay, for example, if you have a 3-bit counter, it can count up to 7. Okay, 0 to 7. Okay, so maximum count, okay, count of a n bit counter is 2n minus 1. Okay, for example, you have a 3-bit counter. Okay, so 3-bit counter can maximum count will be 2 power 3 minus 1, that is 7. Okay, so 3-bit counter can count up to 0 to 7. Okay, similarly, if a 2-bit counter, it can count up to 3, 0 to 3. 4-bit counter can count up to 15, 0 to 15. Number of state will be 8. Okay, and I told you the mod means how many through how many states a counter passes. That is called mod n. Okay, now for example, if I want to make a 10 mod 10 counter, okay, so I cannot use 3-bit counter because it can count up to only 7. Okay, so I need to use a 4-bit counter, and 4-bit counter can count up to 0 to 15. Okay, so if a 4-bit counter can count up to 0 to 15. Okay, so if I want 10 mod 10 counter, which is a 10 state, 0 to 9, I have to use 4-bit counter. But the remaining 6 state, okay, 10 to 15 will be unutilized. So that we have to see how to truncate the 4-bit counter to perform like a mod 10 counter. Okay, so all these things we'll discuss. So first of all, we'll start with your 2-bit counter. Okay, 2-bit ripple counter. So 2-bit ripple counter or asynchronous counter. Okay, ripple counter or asynchronous counter, both are same thing. Okay, and I'm using what? Negative triggering clock. With negative triggering clock. Okay, with negative triggering clock. Okay, so 2-bit ripple counter can count up to 4 states, 0 to 3. Okay, and if it is 2-bit ripple counter, I need 2 flip flops. I need 2 flip flop. Okay, so 2-bit, 2 flip flops, n bit, n flip flops. Okay, so I'm using 2 flip flops. Okay, and I'm taking JK flip flop, and that is also in toggle mode. So that means basically it is a T flip flop. Okay, so I am connecting both 1. Okay, J and K, I'm connecting and giving both. Okay, so it's like a when you make J and K common, that will become your T flip flop. Okay, but this is also in toggle mode, and it is your Q. Okay, this is the negative triggering clock. Okay, this is a negative triggering clock. Okay, so clock will be so for this one, clock will be this one. Okay,
and this is also here. You have a clock, okay, and you have Q bar. So say this is your, you can call it QA, say QA, okay, and this is your QB, and this is your QB bar, okay. This will be connected to this one, and you get output like this, okay. So here you will take the digit QA, here you will take digit the QB, okay. This is connected to this one, okay. Now what I need more, so basically I need to apply a clock here, so here I'm applying clock. So this becomes your 2-bit counter, okay, JK. So basically this is your 2-bit ripple counter. Now we'll see how it is a ripple counter. So I'm using ripple up counter, okay. There can be ripple up counter, ripple down counter. Ripple up counter मतलब 0 से 3 तक count करेगा, okay. So with 2-bit counter it can count from 0 to 3, okay. Up counter will count from 0 to 3, down counter will count from 3 to 0, okay. So this is a basically ripple up counter, 2-bit ripple up counter, 2-bit ripple up counter, okay, with negative triggering clock, with negative triggering clock, okay. Now let us see how it works. Because it is a negative triggering clock, it will work only with negative things, okay. Here also you have JK, okay, JK, and that also you have to make in toggle mode, okay. This is also in toggle modes, okay. So to make a terminal here, one terminal here. So flip flop in toggle modes, okay. So let us say now clock is coming. Clock is like this. Okay, clock is coming. This is a negative triggering clock. Okay, and say let us initially you have QB QA. So say you have QA first. QA initially is QA, all are clear. QA also 0, QB also 0. Okay. Now let me make it slightly bigger. Okay, so this is your QA. Clock signal for QA. So QA is 0 in the beginning. So this is a clock 1, clock 2, clock 3, clock 5, clock 4, 5. Okay, you can keep on going. Clock 6. Okay, now in the beginning QA and QB are 0. Okay, QA is 0. Now there's a negative triggering clock. So when this negative clock at this thing, this should trigger. That means you should toggle. So initially 0. So at this age of this age, it become 1. This become 1. So this is a wave at QA, wave of QA, okay? Or you can call it ABC also, okay? Wave at QA, first output, okay? And now what will happen? This will toggle, okay? Again, it will toggle here. It will go down, okay? Again, it will toggle here, so it will go up. Again, it get toggle here, down. Again, it toggle here, it will toggle here, okay? And again, it will toggle here, okay? सर फर्स्ट वाला नेगेटिव ट्रिगरिंग पे ना, नेगेटिव ट्रिगरिंग पे, तो फर्स्ट वाला सर आपने फर्स्ट क्लॉक पे ही कर दिया ना. फर्स्ट नेगेटिव मतलब फॉलिंग एज पे किया है ना. पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे करना. नेगेटिव ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि फॉलिंग एज पे करना है. तो क्लॉक 1 ही, ठीक है. सो ये ट्रिगर हो गया. सो दिस इनिशियल क्लॉक. Okay, now for this one, this thing, this is the clock. Okay, so now your QB will work. Okay, this will act as a clock for it. Okay, so initially QB is 0. Now it will trigger what? Falling edge. Okay, it will trigger at falling edge of this clock. Okay, say this is 1, 2. Okay, so now here it is going down, it will go up here. Again here it will go down here, it will go down here. Again go here. Okay, here it go up here. Okay, so we are going down, going up. Okay, so you can see here, if the clock frequency is decreasing, okay, if the time period of clock is here is say t, this becomes, this has a 2t, this has a 4t clock period. Okay,
or you can say the frequency is decreasing. If it is frequency is here f, here the frequency of qa, okay, frequency of clock is f, then frequency of qa is f by 2, frequency of qb is your f upon 2 power by 4, it is f power 2 power 2, 2 bit. Okay, so if we n bit counter, okay, सर and हाँ एक बार क्या बी वाली दोबारा रिपीट कर दो। बी वाली, बी यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी आधी है, हाँ जी आधी एक ही नहीं है बी ये, क्योंकि यहाँ पे जब 2 फिनिश हो रहा है, इसका एक ही फिनिश हो रहा है क्लॉक टाइम। ओके, और इसमें क्या है, इसका जब 4 फिनिश हो रहा है, इसका एक ही टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। ओके, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बी ए की, दैट इज एफ बाई 2, और जो बी है उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ बाई 4। तो फ्रीक्वेंसी आधी होती है, सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी आधी होती जाती है। ओके, और जनरली ये जो क्यूबी है इसको बोलते हैं एमएसबी, ये मोस्ट इज एमएसबी टर्म, एंड दिस इज योर फर्स्ट टाइप, दैट इज योर एलएसबी। ओके, विल टॉक दिस वन नाउ, यू सी। सर हाँ सर बोलो। ये नेगेटिव में यही हो रहा है ना कि जब वो ऊपर वाला नीचे जा रहा है तो ये अप हो जा रहा हाँ, है, नेगेटिव यही तो ये कॉन्सेप्ट है ना। नेगेटिव ये तो सर ये कंसेप्ट होता है ये नेगेटिव सर ये ट्रिगरिंग का। सर ओके, नाउ आई टोल्ड यू दिस काउंटर इज व्हाट, दिस द रिपल अप काउंटर, ये 0 से 3 तक काउंट करेगा। ओके, तो देखो काउंट कर रहा नहीं कर रहा है, जैसे ही इनिशियली क्या स्टेट क्या है 0 0, तो ये 0 0 काउंट कर रहा है। जैसे ही क्लॉक 1 फिनिश हुआ, ओके, क्लॉक 1 पे क्या है, ये तो 1 है, ये क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0 1। इनिशियल स्टेट क्या है आपकी 0 0, दैट इज 0, देन 0 1। ओके, देन सेकंड पल्स पे क्या हो रहा है, सेकंड पल्स के बाद क्या आ रहा है, सेकंड पल्स के बाद में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ओके, ये आपका एमएसबी है, एमएसबी इसको पहले लिखेंगे, दिस इज एलएसबी 1 0। ओके, देन यू कम टू थर्ड क्लॉक के बाद ये 1 हो गया, ये भी 1 है, दैट इज योर 1 1। ओके, फोर्थ क्लॉक पे आ जाओ वापस, फोर्थ क्लॉक के बाद क्या हो रहा है, फोर्थ क्लॉक के बाद ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, वापस रिपीट हो गया। कम टू फिफ्थ क्लॉक पे ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, दैट इज 0 1। So you're coming from 0 0, you're counting from 0 to 0 1, 1 0 1 1 0 0 0 1. Okay, so it will count up to 3 and then it will repeat. Okay, so counter will फर्स्ट repeat वाली 10 है ना, फर्स्ट वाली कौन सी, ये लास्ट वाली, वाली 10, ये वाली, लास्ट वाली। हाँ लास्ट नहीं, ये एमएसबी है ना, 0 1 ये एमएसबी है, क्यूबी आपकी तो टर्म है वो क्यूबी क्यू है ना, ये टर्म ऐसे बनेगी ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, 0 0 अगेन 0 1। क्लियर? ओके सर। Okay, so the MSB will come first, and this will, and MSB frequency will be 2 power f power 2 power n. Okay, जितना बिट होगा, अभी यहाँ 2 बिट है तो f by 4 हो गया, 3 बिट होता तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी f by 8 हो जाती, 4 बिट होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी f by 16 हो जाती। Okay, that we'll discuss later. Okay, so if this point is clear, so basically in exam they will give you question, they will ask you to identify कि कौन सा बिट काउंटर है, जैसे बना देगा, बताओगे 2 बिट है कि 3 बिट है कि 4 बिट है। ओके, और ये सब पूछेगा या फिर पूछेगा कहाँ तक काउंटिंग कर रहा है, दिस इज व्हाट 0 to 3 काउंटर, और इसकी स्टेट क्या क्या है, एनी क्वेश्चन दे कैन फॉर्म लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से तो पता चल ही रहा है आपका 2 बिट काउंटर है, दैट मींस इट विल काउंट फ्रॉम अप है कि डाउन है, दैट यू टू रिमेंबर। ओके, you can check first thing this curve, or you can remember if this is connected here in negative triggering, then it is up counter. Okay, so this is a ripple up counter. Now same I want to make ripple down counter, okay, with negative triggering clock. Okay, इसको erase कर दूं सबको, तो ये यस सर। okay, now ripple down counter. Ripple down counter भी similarly circuit है, खाली what you do this time, instead of giving this connecting this one, okay, this time I'm connect this one to clock. okay, बाकी सब सेम ही है। तो ये इसका जो क्लॉक है, ओके, वो इसका ये अगर फॉलिंग, ये फॉलिंग एज है तो ये क्या होगा, ये इसका अपोजिट है। ओके, तो अगर ये फॉलिंग एज पे हो रहा है तो ये राइजिंग एज पे होगा, ये वाला जो आपको होगा चेंज होगा वो राइजिंग एज पे होगा। okay, so now this is the this everything is same, only I am replacing the clock. Okay,
Now let me again make the waves. Okay, so you have this one clock. Okay, so this is your clock. Okay. Now what will happen? You have QA. QA will be what? Initially, this is a clock. So initially say this is QA is 0. So QA will be changed here. It will go down here. It will come here, down here, up here, down here. Okay. So this is my clock QA. Okay. So here it will go up. So this is a negative triggering clock. Okay. Now QA bar. QA bar will be what? QA bar. QA bar will be what? So this is, if this is 0, QA bar will be 1. Okay, QA bar will be 1. Oh, toggle के बाद में दिखना ना, initially तो so initially it is 0, it is 1. Okay, initially it will be 1. Okay, this will be 1. Okay, and then what will become when it go up? Okay, हमको खाली QA QB चाहिए, ये QA बार नहीं चाहिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ. When this go 1, this go down. Okay, this go 0 is go up. Okay, this go down up, इसका opposite होगा. So this is just opposite of this one. Okay. Now what will happen? I want this QB. Okay. So QB, suppose we starting QB with 0. Okay. So instead of doing now this, if I want to see, this will be negative triggering clock now. So just give me 1 minute. So this is Q1 down. Okay. So basically when it is going up, this coming down, this you have to remember. When this is going up, this is going down. Okay, this is going down, it's going up. This is going up, this is going down, this is going down, this is going up. Okay, so ulta hai. This is going up, it's going down, it's going down, it's going up. Okay, so now transition will take place with downward clock, na downward clock. So it will follow this one. QB will follow this downward clock. Okay, so automatically I can say QA is following this downward clock. Okay, now QB will follow this upward clock. इतना फर्क है. इसका upward clock, इसका downward clock है, मतलब इसका upward clock है. तो इसको draw करने की जरूरत नहीं है. Whenever it is Q bar, it is there. You have to understand this will follow of this one. Okay, so if you want to make, now I'll follow this downward clock. Na? Downward clock means here you are coming Q0 initially. Okay, this will go up here. Then it will follow always down clock of this one. Okay, then it will remain same. Then down clock comes here, it will come here. Okay, and then it in again going up, it's coming down here, it go here, and then it will like this. When come down, and then it will come change here like this. Okay, so here it is changing. Okay, here it is changing, and here it is changing. So I'm removing this one. Okay, if you want to keep, you can keep. Okay, but I don't want count for this for counting. This is for understanding. I'm just reversing the clock. Okay, so it is down, it is getting up. Okay, so that's it. So I have taken the this one. So QA bar will be opposite of QA, na? QA, that's it. ना भी वो ये 0 है तो ये 1 है. Okay, ये up जा रहा है तो नीचे जा रहा है. Okay, so अच्छा QB फिर QA बार के अकॉर्डिंग एक्ट हो रहा है. हाँ, QA के बार के अकॉर्डिंग हमने बना दिया डाउनलोड करके. ओके, लेकिन अगर हम इसको हटाना है तो खाली इसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई एम रिमूविंग दिस वन, यू कैन कीप. नाउ लेट अस सी द काउंटिंग पैटर्न. ओके, सो counting pattern will start from the, so initially we have 0 0, counting is 0 0 initially. Okay, now see it here it is 1, this is also 1, so counting is 1 1. Okay, now for second this is 1, this is second clock, after second clock this is 0, this is 1, so counting is 1 0. Third clock this is 1, this is 0, third clock, after third clock this is 1, this is 0. Okay, so this will become again 0 1. Okay, 0 1. Fourth clock, after fourth clock this is 0,
and this is also 0. So this is also 0. So you are starting downward counting. Okay, so you have 3. Okay, you have 3, then you're going to 2, you're going to 1, then you go to 0. Okay, now if you see fifth, after fifth, this is 1 and this is 1. So again 1 1, again 1 1. So this is your ripple down counter. I hope this is clear. Yes, sir. Okay, so this was with negative triggering clock. Okay, now same thing if I want to make with a positive triggering clock. Okay, सर हाँ सर 3 2 1 क्या लिखा है आपने? समझ हाँ, नहीं आई। ये यस सर। ये 3 नहीं है क्या? 1 1, ओके। ये 1 0 2 नहीं है? 0 1 1 0 0 0. ओके, तो ये रिपल डाउन काउंटर है ना. दिस इज योर रिपल, दिस इज व्हाट आई मेड रिपल डाउन काउंटर. पहले वो 0 to 3 काउंट कर रहा था, अभी क्या कर रहा है? 3 to 0 काउंट कर रहा है ना, साइकिल चला रहा है. फर्स्ट 1 पे 3 काउंट कर रहा है, पहले 1 पे 1 काउंट कर रहा था. ओके, अब देखो क्या कर रहा है? 3 2 1 0 0 1 1 1, उल्टा रिपल डाउन काउंटर है ना, रिवर्स काउंटिंग कर रहा है. ओके, क्लियर है? 1 मिनट सर साइड पे हो। जीरो तक। सर ये जो 0 1 वाला वो नहीं आ रहा सर। कौन सर सा एक वाला? मिनट। ये वाला यस सर। भी आपको देखना है एक क्लॉक के बाद में. ये इस क्लॉक ने बोला 1, इसने क्या बोला? 1 1 3. 1 इस क्लॉक ने बोला 2, इसने क्या बोला? 1 0 0 1 1 0 0। 1 0. उल्टा करना ना, ये एमएसबी है. ओके सर। 1 0. ओके, क्लॉक ने बोला 3, इसने क्या बोला? 0 1. ये 0 है ना, ये 1 है, तो 0 1. क्लॉक ने बोला 4, इसने बोला 0 0. ठीक है. सर हमें ये जस्ट 1 क्या 1 ए और क्या सर बी की 3 पे देखनी है? सर। हम्म सर 3 पे सर। हम्म 3 पे तो 1 1 है सर। तो 1 1 तो 3 1 1 तो बाइनरी इक्विवेलेंट 3 तो होता है. सर नहीं सर ये वाला थर्ड वाले क्लॉक पे। ये वाला. सर थर्ड वाली क्लॉक पे सर। हाँ, थर्ड वाले क्लॉक पे क्या है? 1. सर ये 0 है ना. क्यू और बी, क्यू ए नहीं देखना है, क्यू और बी देखना है, ये और ये देखना है. आउटपुट ओके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ आउटपुट यहाँ पे आ रहा है. ओके सर। ओके, ये आपका एमएसबी है. आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर एमएसबी, दिस इज योर एलएसबी. ओके सर। ठीक है. यस यस। Okay, now let me do this. We've done ripple up counter, ripple down counter using negative triggering clock. Okay, now let me do it for positive triggering clock. Okay, now ripple up counter first, ripple up counter with positive triggering clock, positive triggering clock. ओके, तो सेम है, कुछ फर्क नहीं है. आपकी वही वही सर्किट तो वही रहेगा. आपका आपका इनपुट जो है वो टॉगल मोड में रहेगा. ओके, +1 यहाँ पे क्लॉक रहेगा. अब की ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग है तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग बनाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे. क्लॉक. ओके, यहाँ पे आपका क्यू रहेगा, यहाँ पे आपका क्यू बी बार. यू हैव सेकंड फ्लिप फ्लॉप जे के टॉगल मोड +1. okay, here positive triggering clock, you have a q a bar. Okay, this is your MSB and this is your LSB. okay, now positive triggering में क्या करेंगे? This will be connected here, this will be connected here instead of negative triggering में ये था अप काउंटर के लिए, अब इट विल अपोजिट. ओके, so this is your basically now ripple up counter, 2-bit ripple up counter, ripple up counter. Okay, ripple up counter, 2-bit ripple up counter with positive triggering, with positive clock triggering. सर सर QA QB हाँ हाँ बोलो. क्यू ए ये क्यू ए
ये क्यू है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये क्यू है, वो तो कुछ भी नाम तो कुछ भी दो, आपको पता होना चाहिए ये लास्ट वाला एमएसबी है, ओके सर। नाम सिंबल तो कुछ भी हो सकता है। ओके, now similarly if I want to make 2-bit down counter with a positive triggering, okay, तो इस अप काउंटर डाउन काउंटर में उल्टा हो जाएगा, you have a clock this one j k, okay, +1, okay, clock positive clock, you have q a bar, okay, then you have again clock this one, if you connect this one then it will ripple down counter, this will be qb bar, jk will be always there with toggle mode, okay, this is your msb and this is your lsb, okay, and this is your 2-bit ripple down counter, ripple down counter with positive triggering clock, with positive triggering clock, okay. अब इसकी वेव फॉर्म होमवर्क है, मुझे बना के भेजना तुम, इन दोनों की वेव फॉर्म जैसे मैंने 2 की बनाई थी, इनकी वेव फॉर्म तुम बना के भेजना मुझे, ओके, कैसे कैसे काम करेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, जो इसकी क्लॉक है, ओके, डाउन अपवर्ड है, उसकी डाउनवर्ड हो जाएगी, तो डाउनवर्ड पे काम करेगा, ये नेगेटिव ट्रिगरिंग है ना, आप इसमें तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, इसमें पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, रखना इसमें नेगेटिव नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कैसे करना है। ये अभी अब इसकी पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे ये काम करेगा, तो बना के बताना मुझे कि कैसे रिपल अप एंड रिपल डाउन काउंटर का सिग्नल आ रहा है, ओके। सर ये पॉजिटिव है कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे गोला नहीं लगाया ना मैंने, नेगेटिव अच्छा ट्रिगरिंग में यहाँ पे सर्कल भी लगाता हूँ ना मैं, बोला यस 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 सर। हाँ ओके सर। ठीक है। So you have to remember it is positive. So this will act at this will positive for this one, it will trigger. Okay. So बनाने की कोशिश करना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो कल फिर करेंगे। Okay. सर 1 मिनट सर। हम्म। सर वो रिपल डाउन में क्यूबी था ना? हाँ वो QB वो वो क्लॉक के वो साथ है ना? टर्म्स सेम ही है, QA QB QA टर्म सेम ही है। ओके, खाली नहीं सर, वो क्लॉक के साथ जो है QA जा रहा है ना रिपल भी डाउन में, मैंने नोट नहीं किया सर, सॉरी। भी आपका ये क्या है, QA 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 बार, ओके। अब उसमें क्या था, ये रिपल अप काउंटर है, रिपल अप काउंटर में ये आपका रिपल अप काउंटर में ये यहाँ जा रहा है, रिपल अप में, ओके, और डाउन में ये वाला यहाँ जा रहा है। पहले जब हमने किया था क्या था, अप में ये जा रहा था, डाउन में ये जा रहा था ना, ठीक है, अब उल्टा जस्ट का रिवर्स है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग में उसका रिवर्स है, ओके सर। बाकी सही में। ओके, ना अगर मुझे एक ही चीज से रिपल अप भी बनाना, रिपल डाउन भी बनाना है, मतलब मेरा एक ही काउंटर है, वो अप भी जाना चाहिए, डाउन भी जाना चाहिए, तो मुझे एक कंट्रोल वेरिएबल लगाना पड़ेगा। ओके, सो आई एम मेकिंग नाउ 2-bit रिपल अप एंड डाउन काउंटर, 2-bit रिपल अप एंड down counter, okay. So this counter what will do, it will count both the thing, so I am making it for negative triggering clock, negative, तो क्वेश्चन है नेगेटिव ट्रिगरिंग पे आते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने आपको, नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक, ओके। सो नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक में क्या करना है, हमको पता है नेगेटिव ट्रिगरिंग क्या होती है, आपका ये आपका आ जाएगा क्यू जे के, ओके, +1 आ जाएगा, you have क्यू ए बार, okay, then you have other flip flop, okay, then this flip flop you have j k, you have +1, okay, then you have a qb, then you have a qb bar, okay, and then you have this clock, negative triggering clock is coming here, okay,
you are taking here MSB, here you are taking LSB. Okay, and negative triggering clock, I told you this will become the clock for this one. So up to this is it is fine, everything fine. Okay, now I want to make this is up and down both. Okay, so let me give space. I have to make some circuit here. So I want to make this this should work both up and down depending on the control parameter. Okay, so I want to make it this one J K, okay, plus 1, okay, QB bar. This is your what? This is your MSB. Okay. Now what I'm doing here, I'm making one more controller. One more controller input here. This controller input is called M. This M will decide, okay, whether it will work as a up counter or down counter. Okay. So I'm taking M here and inversion of M here. Okay. Now if I want to make it up counter, so this should come here. Okay. So this should come here. So what I'm taking M will come here. Okay. And this will come here. Both will become AND together here. AND. Okay. So if I make this AND, what will become? This will become your, okay, this should go to here. This will come here. Similarly, if I want to make connect this one here, okay, then what will come? This will come here. This will come here. Both make AND gate, and this will come here. Okay, and I am putting a OR gate here. This will come here. This will come here, and this will connect here. Now see how it works for a ripple up and down counter both. Okay. Now here output is what? Here at clock of F2 is what? Clock of second flip-flop is what? That is function M into Q. M into QA. This M is coming, and this is what? This is coming M bar plus QA bar, isn't it? Okay. Now say I want to make ripple up counter. सर हाँ, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगरिंग नेगेटिव नहीं होगा? नेगेटिव ट्रिगरिंग है वो तो नेगेटिव ट्रिगरिंग था ही, ठीक है. ओके, साइन तो नेगेटिव है ये. ओके, नाउ दिस इज क्लॉक F2. ओके, now I want to make it I want to make it to count ripple up. Okay, so I want it to up counting. So up counting. So for up counting, I'll put M equals to 1. So when I put M equals to 1, okay, automatically my clock becomes QA. This clocks become QA. Okay, because M becomes M is 1. If a high voltage here, automatically what will become? This becomes 0. This whole term becomes 0 here. So this is OR gate. So only this is connected to this one directly. Okay, because now your clock is equal to QA, and clock equal to QA is equal to it happens in up counting. Okay, जैसे पहले किया था same ही कर रहा हूँ. Okay, and for down counting, I'll put this M at a low input. I'll make M 0. So when I make M 0, this term automatically becomes 0. This becomes 1. So your clock becomes what? Clock for F2 becomes now Q A bar. Okay, this goes here, and this counts down count. This do down counting. Okay, so this is a one counter. We can count up and down both. Okay, 2-bit counter. I hope this is clear. अभी कोई confusion हो तो पूछना मेरे से, क्या confusion है? बहुत simple है. ओके, तो अब आगे मैं जो भी करूंगा वो नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक के साथ ही करूंगा. ठीक है ना? पॉजिटिव ट्रिगरिंग आप खुद कर सकते हो, सारे केस तो नहीं कर सकते. वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव करते रहेंगे. आपको तरीका पता होना चाहिए बस. तो आगे जितने भी क्वेश्चन है सब मैं जितने भी काउंटर बनाऊंगा सब नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक के साथ ही बनाऊंगा. ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न एंड बिट काउंटर. ओके, जिसमें जितनी स्टेट है उतना ही काउंट करना है. देन वी विल लेटर सी, अगर मुझे 3 बिट भी काउंटर भी है तो मुझे सपोज 5 तक ही काउंट करना है,
तो बाकी 2 स्टेट का मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास 4 बिट काउंटर है लेकिन मुझे काउंट 10 तक ही करना है, मॉड एंड काउंटर बनाना है, तो बाकी बची हुई 6 स्टेट का मैं क्या करूंगा, वो हमको देखना पड़ेगा। So first let us say now this was 2 bit counter. Now I'll do 7 more example 3 bit counter. Okay, 3 bit सर अब ये हाँ क्लॉक F2 क्या सर? हाँ भी क्लॉक ये F2 ये क्या है? ये फ्लिप फ्लॉप 2 है ना, ये फ्लिप फ्लॉप 1 है ना, तो ये क्लॉक ऑफ F2 क्या है? QA नहीं है क्या? क्लॉक, इसके लिए क्लॉक क्या है? क्लॉक सिग्नल क्या है? QA। ओके, क्लॉक ओके for सर। F2, flip flop 2 is QA. Similarly, clock for F2 is QA bar for down counting. ठीक? ओके यस ओके सर। ओके। तो बस आपको ये मेनली पहचानना पड़ेगा कि एग्जाम में कि कौन सा काउंटर है ये। तो आप चाहे ड्रॉ करके देखो, चाहे वैसे आपको याद है तो वैसे पहचान लो। Okay, now let me make 3-bit up counter. Okay, now I'm only using negative triggering. Okay, so I'm making 3-bit. ये सारे asynchronous काउंटर कर रहे हैं, 3-bit रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर। ओके, दिस इज 3-bit रिपल अप काउंटर। 3-bit रिपल अप काउंटर मतलब 3 बिट है, जितने बिट है उतने फ्लिप फ्लॉप चाहिए। ओके, नंबर ऑफ बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट। दिस इज नाउ माय flip flop 2. This is my flip flop 3. Okay, JK using JK. So say now this time this is a QA bar, QB bar, QC bar, JK. Okay, you are doing like this. This is your +1. I am doing this one. This is your +1. This is like this, +1. Negative triggering clock. नेगेटिव ट्रिगरिंग क्लॉक। रिपल अप में ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ओके, दिस इज योर QC, दिस इज योर MSB, दिस इज QA, दिस इज योर LSB। ओके, दिस इज योर क्लॉक, everything is connected now. Okay, now 3-bit. Okay, so this is flip flop 1, flip flop 2, flip flop 3. Okay, let us do its counting. Negative triggering clock. Okay, again clock is coming. आप लोग खुद बना सकते हो, अब तो आसान ही है, थोड़ा छोटा क्लॉक बनाओ, जगह नहीं है। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now what you have, you want, this is your clock, you want QA. So initially QA is 0, so this is negative triggering clock. So your QA become change here, toggle क्यों कर रहा है? क्योंकि JK1 है। whenever you JK1 then this is toggle conditions. Okay, क्लॉक के साथ टॉगल हो जाएगा, ये टॉगल हो गया, ये टॉगल हो गया, ये टॉगल हो गया, ये टॉगल हो गया, ये टॉगल हो गया। Okay, now QB will toggle with your QA. So QA initially 0 0, nothing will happen. यहाँ पे टॉगल हो गया, ये यहाँ पे टॉगल हो गया, यहाँ पे टॉगल हो गया। This is downward, this is now downward for this one. Now we want QC कुछ नहीं होगा यहाँ पे, 0 0 0, only it will toggle here,
it will toggle here, it will go here. Okay, now initially we are starting from 0 0, that is 0 0 state. उसको भूल जाओ. 1 पे counting क्या है? 1 पे this is 0, this is 0, and this is 1. After 1 clock counting is what? This is 1, this is 0 0, so this counting is just 0 0 1. After clock 2, the counting is what? This is 0, this is 1, this is 0. Counting will start from here. This is MSB, so 0 1 0. Okay, after 3 0 1 1 0 1 1. After 4th 1 0 0 1 0 0. Okay, 3-bit counter है ना? 3-bit counter will count up to 7. Okay, अब ये 7 भी बनाना पड़ेगा. 7 के बाद फिर वो काउंट हो जाएगा 7. Okay, so this is going down, this is going up. Okay, and for this one it is going up here. Okay, 7, and it should be 8 also. 8 बन जाएगा, दिखेगा तुम लोगों को 8 वहाँ पे. 8. Okay, this will go down, and this will go down here, and this will go down, up, down. This will go up here. Okay, like this something will come. Okay, so now we 0 0 1 after 4, 1 0 0 after 5. After 5 this is 1, this is 0 1 0 1. After 6, this is your 1 1 0. Okay, so 1 1 0. After 7, this is 1, this is 1, this is 1 1 1 1. Okay, after 8, okay, after 8 should become, this is a 1, this is 1, so it will go down 0. Okay, so after 8 cycles 0 0, this is 0 0 0, so 0 0 0. Okay, so that will again cycle will become, and it will count your continuous cycle. So because this is a 3-bit counter, it cannot go beyond 3-bit counter कहाँ तक करेगा? 8 7 तक ना. Maximum count is 2n minus 1, that is 2 power 3 minus 1 up to 7. So it will count up to 7. You can call this as a mod 8 counter also, because it has a 8 states, total 8 states. 0 will be also counted as state. So this is not a mod 7 counter, it is a mod 8 counter, because the number of state is equal to number of mod. Okay, so mod is that one. Okay, so this is, now this is 3-bit triple up counter. Down counter you have to make with negative triggering. That is your homework, you have to send me. Okay, इसको erase कर दूं क्या? So समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, काउंटिंग कैसे हो रही है? ओके, सो अभी क्लियर है तो? Yes, sir. ओके, now let me solve one problem. Okay. She says, just now I have plotted three wave na, QA, QB, QA. Okay, okay. Just now I plotted three things, 3 clocks. Okay, A, B, QA, QB. Okay. So he says, what is the clock frequency of the at QC? Okay, what is the clock frequency at QC? Okay, what is the clock frequency? Clock की frequency पूछ रहा है. If frequency of QC, okay, frequency QC is equal to 24 microsecond. Okay, so what is the frequency of clock पूछ रहा है? Tell me, what is the frequency of clock? So this is 3-bit counter. 3-bit counter, ABC 3-bit counter. Okay, 3-bit counter. जो लास्ट में किया वही वाला पूछ रहा हूँ, 3-bit counter.
So frequency at QC should be equals to frequency of by 2 power n, because this is Sir, a third bit 3 ना. microsecond, 3 microsecond. Okay, 3 माइक्रोसेकंड कैसे आएगा? QC की फ्रीक्वेंसी आपके दे रखी है और ये f by 2n होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इसको कितना आएगा? QC की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 24 माइक्रोसेकंड दे रखी है, ये टू 2 पावर n 2 पावर 3 8 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 192 microseconds. Okay, no, this is a clock. Microsecond is, this is your time period is given, na? This is time period is given. Okay, this is time period is given, not frequency. This is time, you have to convert in frequency first. Okay, so 1 by 24 microsecond. Okay, or better you can say that the clock time period, the clock time period will be 24 by 8. Okay, that is 3 microsecond. Okay, and the clock frequency will be 1/3 microsecond. Okay, that is 10 to the power 6 upon 3. Now it should come 330 hertz. Check it. आ रहा कहीं आ रहा है? Kilohertz, 330 kilohertz. 330 kilohertz. This is time period, na? Time period तो बड़ा होता जा रहा है, frequency is decreasing but time period is increasing, na? So the clock has a time period lesser than this one, power 8. Okay, so clock time period is known. Now I can find clock frequency. सर ये 24 by 8. नीचे क्या 8. भी फॉर्मूला क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ FC is equal to frequency of FC is equal to clock frequency, और FC बोलो या QS, frequency of QC is the frequency of clock upon 2 power n. टाइम पीरियड में उल्टा हो जाएगा. ओके, टाइम पीरियड ऑफ QC क्या हो जाएगा? 1/TQC is equal to 2 power n upon f of time period of clock. Time period of clock क्या हो जाएगा? Time period of clock. Okay, now you want time period of clock, that will be what? Opposite this one. Okay, this is given 84. So time period of clock is equals to time period of QC by 2n. So वही तो किया मैंने. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बना के चले. बस आपको पता चलना कि MSB ये QC क्या है. क्वेश्चन में जनरली MSB नहीं, QC नहीं बोलेगा, वो MSB बोलेगा. काउंटर बता देगा 3 बिट काउंटर है, 2 बिट काउंटर है, 4 बिट काउंटर है, and then it will tell last, if you want to ask last, then it will ask what the frequency of MSB or LSB, ऐसे बताएगा. ठीक है, then you have to identify what is MSB and LSB. So I'm giving one more question. If the clock frequency okay is 8.192 megahertz, okay, what is the frequency at output of, okay, at the output of the MSB, at the output of MSB. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. इससे पहले क्वेश्चन और है. ओके, a binary ripple counter okay, need to count
up to 16383. Okay. Then how many flip-flops are required? How many flip-flops are required? Okay. So once you know this one, how many flips are required, you know how many bit is there, and then you can find this one. Both two questions. It is 16383. 16383. Okay. So it is counting up to 16383. So tell me, how many bit counter, how many flip flops are required? So n bit counter can count up to how much? N bit counter. Okay, maximum count क्या होती है? Maximum count 2 raised power n minus 1. 2 raised to power n minus 1. Very good. Okay, so here 2n raised to n power minus 1 is given what? This one 16383. So tell me what is n? 14. 14. Very good. N is 14. Okay, now once you know that this n is 14, okay, you can find the frequency of MSB. Frequency of MSB, that is f upon 2 power n, that is 14. Okay, so now you know the frequency is megahertz, 2 power 14. Tell me the frequency of MSB approximately. Okay. So f is your 8.192 megahertz. Just 6 upon 2 raised to 14. कितना आ रहा है? 500. 500. Okay, very good. Okay, so the frequency of MSC is 500 hertz. This is your answer. Okay, so I'm stopping here. We'll continue tomorrow. कोई क्वेश्चन है तो पूछो. Thank you, sir. Thank you.